Hey guys, welcome back to my YouTube video. So in this video I'll be talking about RCIP program, which is a federal program recently introduced. So basically RNIP program था जो कि अगस्त 2024 में बंद हो गया था एंड उसको रिप्लेस करके ये RCIP प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम. सो अभी हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इफ़ यू आर सिटिंग इनसाइड कैनेडा और सिटिंग आउटसाइड कैनेडा, हाउ यू कैन अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम, व्हाट ऑल द थिंग्स यू विल बी रिक्वायरिंग टू गेट एलिजिबल. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो गाइस, पहली बात तो ये है कि इस प्रोग्राम के अंडर 14 कम्युनिटीज़ फॉल करती है फ्रॉम ऑल ओवर द कैनेडा, रूरल कम्युनिटीज़. एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दी अपनी प्रायोरिटी सेक्टर्स की जो लिस्ट है, ऑक्यूपेशन लिस्ट. सो यू जस्ट नीड टू गेट the job offer letter from the designated employer in that specific community where you are actually looking to settle down. And once you get that job offer, उसके बाद आपको 1 साल काम करना है under that specific knock code. Once you complete your experience, then you need to apply for the endorsement letter from the community over there. एंड वंस यू गेट दैट, एंड दूसरी चीज़ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑक्यूपेशन टीयर 0 या 1 की है तो आपको CLB 6 चाहिए. अगर आपकी जॉब 2 या 3 टीयर की है तो आपको CLB 5 चाहिए. अगर उसके नीचे की है देन आपको CLB 4 चाहिए. इट्स टू गुड. I would say getting that kind of score in language, I don't think so it's a difficult task if you're working under, specific kind of jobs. पहली requirement है कि आपको settlement funds चाहिए, which is like a reasonable amount that you can easily show in your bank account and intentions to live in that community. So these are all the requirements basically जो कि easily complete हो सकती हैं. Getting the job from the designated employer in that specific community, that's the only thing which is a bit difficult. But definitely अगर आपकी approach सही है and you are actually experienced enough, even if not experienced, you have that specific kind of education, then definitely with little bit of hard work you can easily get that job. Now if I talk about the students who are actually studying inside Canada, so अगर आप इन कम्युनिटीज़ में जो भी कॉलेजेस आते हैं उसमें से कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हो या फिर कोई डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, सो गाइज यू नीड टू मेक श्योर अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हो तो आपका 2 years का कॉन्टीन्यूस डिप्लोमा होना चाहिए. 1+1 वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं. सो अगर 2 years का कॉन्टीन्यूस डिप्लोमा आप कवर करते हो, कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर जो है वहाँ पे वो आपको जॉब ऑफर कर रहा है, बट दैट नॉक कोड हैज़ टू बी फ्रॉम दैट प्रायोरिटी सेक्टर ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसमें से ही होना चाहिए. देन आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है. विद योर एजुकेशन एंड द जॉब ऑफर, getting that CLB which is required as per your occupation, you can apply for the endorsement letter from the community. Basically your employer is going to help you to get that endorsement letter and you can apply under this program. Beautiful, no? And guys, you don't need to worry even if you have not completed your studies from the colleges falls under these communities. So फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ बे एक इन 14 कम्युनिटीज़ जो हैं उसमें से एक कम्युनिटी रूरल कम्युनिटी है ओंटारियो में. सो अगर आपने वहाँ पे स्टडी नहीं करी है, आपने लेट्स सपोज टोरंटो में अपनी कंप्लीट करी है स्टडी, एंड बट यू आर गेटिंग द जॉब ऑफर फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर इन नॉर्थ बे फ्रॉम दैट प्रायोरिटी सेक्टर की जो भी ऑक्यूपेशन है उसमें से, देन यू जस्ट नीड टू वर्क ओवर देयर फॉर 1 year and after that your employer is going to help you to get that community endorsement letter. And obviously you have already served the community enough like पूरे साल के लिए, then definitely उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको endorsement letter देने के लिए. And once you get that you can apply under that. So दूसरा scenario example से समझाती हूँ मैं आपको. Let's suppose you have completed your studies as a PSW in Toronto and after that you are working as a PSW in some commercial setting and your code is going to be 33102 and you have completed 8 months over there. And then in North Bay under the priority sector occupation list 33102 is the code over there. So, and you are getting some PSW job in commercial settings from some designated employer in North Bay, then you can go decide to take that job and complete your remaining 4 months over there. And after that you can apply for the endorsement letter from the community with the help of your employer and then you can apply. So basically what I'm trying to explain it to you, so even if you have not completed the whole 1 year experience over there under that specific code जो भी occupation list में से है, तो
तो आपने part of your experience has completed outside the community and remainder you are completing in that community, then you still can apply once your experience is for the whole 1 year. But you need to understand that you are going to require the community endorsement letter. Without that you won't be able to apply. सो अगर गाइस एजुकेशन की बात करें तो इस केस में आपको ग्रेजुएशन की भी ज़रूरत नहीं है. इवन विद आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई अंडर दिस प्रोग्राम. सो लेट्स सपोज somebody is sitting outside Canada and they have completed their 12th, but just make sure ECA has to be completed. So you have to get your credential approved as per the Canadian equivalency. Then only you will be able to apply. And again, you need to get the job offer from the designated employer, and that occupation has to be there on the list of that community. Then definitely you can apply. So guys, this is it for the video. So I'm just gonna wrap it up because this is supposed to be a quick video, and in detail about the priority sector occupations and हर community के बारे में हम बात करेंगे in my upcoming videos. So yeah, eligibility criteria I've already discussed with you, and then what exactly is going to be settlement funds for that, and the other things are also there, like in the community कौन कौन सी communities आती हैं, कौन कौन से designated employers हैं. So इस बारे में हम definitely चर्चा करेंगे हमारी आने वाली videos में. So for now this is it, and if you have questions related to that, then you know what you need to do. You need to ask me the questions so that I can help you guys, and don't forget to subscribe, like and share this video. Thank you.